with us the youngest female magician of our country, Pallavi Deshpande. And yes, welcome. Namaskar. And I'm glad to tell about her. She has authored a beautiful book, The Door to Confidence Opens Here, with Pallavi Deshpande. Huh? And she is having many capabilities, multidimensional abilities. She has been pranic healer, astrologer, hypnosis. She is practicing, and many more things. Many more things. If when I saw her resume, it was listing long, long things. So many things. जितना उनका आप एज सोच नहीं सकते उतनी सारी चीजें लिस्टेड है. Holistic nutrition. She is member of Akhil Bharatiya Nari Pragati Manch, first Indian girl magician to perform abroad and to be seen on Indian TV, Zee TV, Mumbai Doordarshan, and she has bagged lot many awards. Bal Jadugar Shiromani, Brahmi Sundari, Jain Rashtra Gaurav Puraskar, and Sark Magic Festival. Wonder Girl of India is with all of us. She has bagged Women Excellence Achievement Award also, Sukanya Award, Nari Shakti Award, and Global Wellness Award also. And she has attended lot many courses with Mind Power, Mind Miracles, and lot many things. So she is with us, and we are happy. We are obliged rather that you have spared time for us. And yes, we are ready to see your magic. The divine magic begins now. Thank you. Yes, the divine magic begin now. Yes, Thank you so much, Meena ma'am. Thank you to all the organizers, all the team who is working behind this such a noble initiative, such a needed initiative. And I feel so pleased to know that, yes, certainly, and now being at the completion, it would be yeah, a huge, huge contribution to all the souls uh, being here. And that is super, super, super powerful. The intention itself, like I felt so, so, so happy uh, and connected to know. And I feel very proud and pleased and blessed to be part of this wonderful initiative. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And I believe, मैम, कि जो भी बोया गया है वो yes, सही समय पर डेफिनेटली शो अप भी करेगा. सो एंड जिसके जिसके लाइफ में जो जो नीड होती है ना, बराबर वो चीज एब्जॉर्ब हो जाती है. सो मे right. नॉट बी द each and everything being covered here, but whatever is needed, whenever needed, for whoever, I am sure it will come up at the right needed time, and that's work done. And the name of my book is The Door to Confidence Opens Here. So the door is opened now. People may take their own, किसी को किसी से कनेक्ट होगा, किसी को कोई पर्टिकुलर वॉट एवर पार्ट कवर्ड वो क्लिक होगा. हर एक का अपना एक जर्नी है, और वो क्लिक एक बार हो गया तो कौन सा दरवाजा आपके लिए रेजोनेट करता है, आपको लगता है कि दिस इज लाइक फॉर मी, यू कैन जस्ट टेक दैट स्टेप, walk, start walking, take your own time. But this is a beautiful path, a needed path, and I feel we must all step in. So thank you so much for the initiative, and thank you for including me in this initiative. Thank you so much. So, the topic today is about capacity and confidence building. So, I want you to actively participate, each one of you. And I want you to do one thing. अगर आपके पास book और pen है,
तो आप पहले तो आपका खुद का अभी का कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस, कोई भी एक एरिया ले लीजिए लाइफ का, हम सबके पास एक ना एक एरिया तो होगा ही जहां हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे आई डोंट वांट टू बिल्ड माय कैपेसिटी एज a cricketer, that doesn't resonate with me. But then there would be some area wherein I am wanting to go forward. It can be as in for as a mother, or as a homemaker, or taking care of all the dimensions more gracefully, effectively, and lovingly. Whatever is needed to be done, whatever I need to do, whatever I want to do, and whatever I have to do, I do it with grace. So that is for me building my capacity. Building my capacity. What is it for you? You know it. You know it. So rate yourself. Don't compare with others. It is a trap. So just rate yourself, be honest to yourself on a scale of 0 to 10. मैं कहाँ हूँ? Same is with confidence. On a scale of 0 to 10, take any area of your life, may it be oratory skills, may it be success in your studies, may it be any area of life, but only compare with yourself. Forget about anyone. Forget about anyone else, anyone. Don't compare. Just see and trust your own rating also. Don't doubt your rating. जो आप रेट करोगे वो आपका अभी का सही है. So जब वो चेंज भी होगा तो वो आप ही का होगा. So that is your right. Okay, so just rate your confidence and rate your capacity wherever you are. Zero is बिल्कुल नहीं, and like zero. Okay, there, कोई बात नहीं, it's fine. When you start working very genuinely, honestly, and rightly, or in the needed way, you will see a change. So डर किस बात का? So on a scale of 0 to 10, rate yourself now. Done? Okay, now really give it a thought. What is actually happening? Where is my capacity actually depleted? What are the energies within me? I will talk in terms of energy, okay? Being a magician, I believe in that energy and unseen world. So, अगर नहीं समझ में आता है तो आप please put a question to me so that I can help it make more. I can help you understand better. So, where are your energies getting depleted? चाहे within and around you, जो कुछ भी है, कहाँ मेरी कैपेसिटी एक्चुअली मैं कम कर रहा हूँ, जाने अनजाने में, और कम कर रही हूँ जाने अनजाने में, और what is it that is affecting or depleting my confidence. अगर ऐसे लग रहा है नहीं मुझे नहीं पता क्या, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट हियर, बट कुछ ना कुछ फाइल जरूर ओपन होगा, है ना. जस्ट गेट अवेयर. इज इट वुड बी सम व्यक्ति, मम्मी पापा फ्रेंड्स, या कंपैरिजन ऑफ सिबलिंग्स, है ना. इट कुड बी सम व्यक्ति, सम वस्तु, और सम परिस्थिति, है ना. इम्पैक्ट ऑफ सम पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस अराउंड अस. But is it really the people, or is it how you process within when you are faced by or connected to such people, circumstances, or situation? Now get this, कि सचमुच वो व्यक्ति जिम्मेदार है, कि वो व्यक्ति ने जो कहा, जो भी किया, जो भी मैंने देखा, उस सुना समझा, उसका प्रोसेसिंग जो मैं कर रहा हूं, that is depleting my capacity. Is the situation depleting my capacity, or the earth that I am give the meaning that I am attaching to the situation is depleting my capacity? Really understand. Is it that? Only then you can do something about it. वरना आप conclude करके full stop लगा दोगे.
then you are closing the door, you're not opening the door. So first is real awareness of, can I, where am I, what is it, and can I do something about it? Okay, so clear, कुछ ना कुछ आंसर्स मिल गए आपके. नाउ आर यू प्रेजेंट कि मे बी आई एम इंटरप्रेटिंग द डेटा इन a way that is lowering my confidence? Or ask yourself, can I process or can I interpret a little differently so that I am unwavered, I am unstoppable? So I am not talking about blaming anyone. I am not talking about even blaming yourself. यहाँ पीछे का जो इमोशन है, संदर्भ है साथ में, दैट इज ऑलवेज कंपैशन, ऑलवेज एक्सेप्टेंस, बिकॉज द एनर्जी इज वेरी डिफरेंट. वरना वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाएगा ना. वी वांट, ओवर कॉन्फिडेंस में इमोशंस जो है वो थोड़े नेगेटिव होते हैं. सो this is about only looking at your own self, which you may not like because it is easy ना. और ये चीजें है ना मैम, हम लोग बहुत बचपन से ही अनजाने में पिक कर लेते हैं, वेर इन वी ब्लेम समवन एल्स फॉर आवर प्रॉब्लम्स ना. जैसे चलते चलते एकदम से बच्चा गिर गया और कुछ चेयर से ये लग गया, तो माँ क्या करती है, हाथ रे, शी विल डू दैट, कि अरे तूने ऐसे किया, वो चेयर को लाइक मजाक मजाक में करते हैं ना, कि यू ब्लेम द चेयर. बट द मदर कुड हैव just added one thing, that, oh, next time you take care and walk a little better, so automatically we become more responsible. So it is just, Yeah. yes, it is In just that, about. in that, I would like to add on that Mhm. now with these all training starts, with all understanding all these things which you are telling, we now say the child other way around. We say Mhm. कि अगर if टेबल से अगर टकरा गया है सपोज वो, तो फिर हाँ. वो कहेंगे टेक हिज अटेंशन टू द टेबल. अरे टेबल को लगी तो नहीं, देखो देखो टेबल को तो नहीं लग गई. Means that way he will develop the sensitivity towards non-living even. Yes, So that will be yes. another step ahead. Instead कि वो उसको अपने ही ऊपर सेल्फिश एक एटीट्यूड हो कि मुझे लगा कि नहीं लगा. ही मस्ट एक्सपैंड हिज हॉराइजन्स कि अरे इसको भी लग सकता है, इसको इसका भी ख्याल रखना है. इवन मीन्स नॉट इवन द लिविंग वंस बट लेट द सेंसिटिविटी एक्सपैंड टू द नॉन लिविंग. इतना अगर Absolutely. हमारा सेंसिटिविटी और कंपैशन हो जाए तो इट्स नथिंग लाइक इट, है ना. तो ये Absolutely. ट्रेनिंग देना चाहिए. बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है कि Absolutely. बच्चे को हम लोग जो ट्रीट करते हैं ना शुरू में, तभी उसको कहते हैं कि टेबल को मार दो. तो देन ही लर्न्स टू ब्लेम द टेबल एंड द सिमिलर ब्लेम ही विल पुट टू अदर्स इन हिज लाइफ, है ना. Yeah, या and that रियली. in that we are making the child weaker. We are decreasing या. the capacity to accept, the capacity to be okay, the capacity to find a way and to understand that it is not a big problem. It's a very small problem. और उसका इम्पैक्ट भी उतना ही छोटा होगा. सो प्रॉब्लम को अगर हम छोटा कर दे कोई भी, और उसके ऊपर हमारी इमोशंस हम वेस्ट नहीं करें, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, we can move forward and we can flow with life, so we all have that power. But I really want you to understand and consider कि जाने अनजाने में ऐसी कई चीजें हमारे साथ भी हुई है बचपन से लेके आज तक. सो कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज उनके पास भी कोई मैनुअल नहीं था ना. उन्होंने अपने खुद के ढांचे के हिसाब से, बिकॉज दे वर ऑल्सो ब्रॉट अप इन अ सर्टन वे, सो उन्होंने जो बचपन से देखा सुना समझा, उसके वजह से वो जैसे है वैसे है.
but you have the power to process information. So we need, and you are here attending this session. So the power is in our hands. Okay, so उन्होंने जो किया वो किया, हमें कैसे प्रोसेस करना है ये हम पर है, राइट? सो कंसिडर कि बहुत कुछ जाने अनजाने में बोया गया है जिसको हम फिक्स एंड चेंज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वी remove the impact of this. So are you with me? तो इसलिए the book that I have come up with is The Door to Confidence Opens Here. And उसका जो थीम है आप लिख लीजिएगा, that is cleanse, align, seed and grow. क्योंकि हम जितना भी चाहे, जब तक हम वो पास्ट का असर कम नहीं कर पाएंगे तब तक, और जब तक हम अपने आप को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे विद द यूनिवर्सल फोर्सेस, विद व्हाट इज नीडेड, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमें जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. So that is my own understanding, my own experience and my own learnings after several breakdowns. So जो मैं आपको बहुत easily pass on कर रही हूँ, so जो मैंने शायद पिछले whatever number of years में सीखा है, maybe past 30-40 years, वो learnings I am trying to share in 30-40 minutes and you are getting it easy. So be really, receptive and make sure that you implement this in life. And my only intention is that you are able to overcome these challenges more easily, more gracefully. क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो अफर्मेशंस फॉलो कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, who will say that no, I don't want to be confident or I don't want the capacity to be, improved. Of course we want to grow and expand and be a better person, a better human being, but वो access नहीं है. So जो access है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ from my own several learnings. Okay, so please be attentive and write there in the book, cleanse, align, seed and grow. So how do you cleanse? What are the easier methods to cleanse? Because me and my husband, we always used to have debate, and he always said me that no, I don't have so much time, and like even the generation next, I always consider कि किसके पास इतना समय है कि हम, of course अगर करें तो it is good for us, but I have made it very easy कि आप quickly implement कर सको. Okay, so what are the ways to cleanse the असर? कि कुछ हुआ और आपको समझा कि आपकी कैपेसिटी डिप्लीट हुई, आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई, आप सुबह सुबह उठे, आप बहुत अच्छे मूड में हो, इमीडिएटली आप बाहर जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पे कुछ देख लिया, कोई इंफॉर्मेशन सुन ली, तो क्या होगा, अनजाने में उसका असर हम कैरी करते हैं. अगर हम वो असर इजीली क्लेंस कर पाए तो definitely it would be easy to restore your capacity back, restore your confidence back. Okay, and I am talking about, we think 60,000 thoughts or more per day multiplied by your age. So that is a huge clouding, but unnoticed. So सचमुच, let your people around you, your own friends, your own family have any label for you कि ये तो shy ही है, ये तो ऐसे ही है. I want you to look at yourself, on a scale of 0 to 10. Okay, fine, मैं यहाँ हूँ. I really want to go to 3, 4, 2.5? Okay, and rate yourself. Have patience. So
पहले है, अगर आगे जाना है तो पहले क्लिंस करना पड़ेगा। क्लिंजिंग का फर्स्ट डायमेंशन इज वेरी सिंपल, जस्ट से एंड डू दिस, डिलीट डिलीट डिलीट। may sound a bit weird, crazy, और अंधविश्वास की तरफ आपका जा सकता है सोच, but this is pure energy science. I have used it, and that is the reason I'm courageously sharing with you and all. So this works because it is you know unseen. Don't exclude it, use it for yourself, and if you feel this works, please carry forward. I have so many clients and so many, and my own husband, he uses it very regularly, that कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ देख लिया, रास्ते पे कुछ देख लिया, you know that this is going to negatively impact you. आपके नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस बीच में आने वाले हैं। फियर है, एंगर है, वरी है, एंजाइटी है, अगर ये पॉपअप हो रहा है तो वो हमारी कैपेसिटी को डिक्रीज करने वाला है। ओके, सो उस समय हम क्या करेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे डिलीट डिलीट and delete. Just move your hand like this and say delete delete delete, and just say that I let go of the impact of what is said, what is heard, what is seen, the unwanted impact of it. I just delete that. Okay, and don't delete it gusse se, okay, because you will add up to it. So just make sure that you delete it very compassionately. Just say delete delete delete. Kitna time laga? Not even 3 seconds, but have pure intention, be honest. Okay, उस समय दूसरे पर्सन के लिए नफरत नहीं, okay, just acceptance that okay, I don't know how I attracted this, okay, I remove, it's a hook, bye bye, delete. Okay, so that you restore your power back. Okay, so one very easy method is delete. Second is, रोज सुबह ब्रश करते हो आप, जब whenever you are doing your toilet activities, जब आप कमोड पे बैठे हो, make sure that along with your physical waste, you always remove your emotional waste. कि जो भी इस चीज को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके जो भी डर है, इस प्रोजेक्ट को लेके, whatever सिचुएशन को लेके जो भी डर है, फियर है, एंजाइटी है, वरी है, एंगर है, आई remove this because it is not good for me, it is not good for others, and it doesn't serve my higher good, however right I am. So you need to remove it though it is not seen. ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत हम सबको है, ये पाइल अप होता है। सो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी ना, डू यू नीड एनी एक्स्ट्रा टाइम, जस्ट कमिटमेंट, एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम सीइंग एंड यूजिंग इट। वैसे भी हम खुद से बात करते रहते हैं, तो उस समय आपको ये थॉट क्लिंजिंग का, इमोशनल क्लिंजिंग का आपको क्रिएट करना है। एंड जस्ट से थू, फियर थू, एंगर थू, इसने कुछ कहा एंड इट इम्पैक्टेड मी टू, इजी। सो जस्ट से दैट, एंड फर्स्ट very powerful 3 remedies, very powerful, we all can do it. One is delete delete delete, then spit it, and every time, so कितने बार हमने क्लटर को रिमूव किया, एन नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि वो नीड है अभी की। if we don't want to be impacted by the collective consciousness, think more clear headed and restore our own power back, this is the need. Okay, so first is cleanse के मैंने आपको 3 टेक्निक सिखाए हैं, and they're very easy. They are in my book, The Door to Confidence Opens Here. Cleanse के बाद होता है align. Okay, so align is aligning to the higher intelligence, aligning to the supreme, aligning to the higher consciousness. Okay, so I want you to do it, and it is very easy. क्यों ऐसा जरूरी है? Because we are aligned to the problems. और जब प्रॉब्लम्स पे अलाइनमेंट रहेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। सो हमको कहाँ अलाइन करना है अपने आप को? वी नीड टू अलाइन फर्स्ट
Align first to the super consciousness. How? Just a smile is alignment. Every one of you sitting here, be you, whoever is attending, just एक बार smile करो और smile करके that pure positive smile and try thinking a negative thought. Anger वाला thought create करके देखो, fear वाला thought create करके देखो, आपकी smile उड़ जाएगी. So for you to be super powerful and think aligned and be in the needed zone, the manifestation zone I call, you being aligned is very important. क्योंकि अगर मैं fears से कितना भी actions ले लूँ ना, तो उससे मुझे वो result नहीं मिलेगा. कैसे? See, any action that is any action that is backed up by fear, by anger, by worry, by guilt, अगर वो action करते हुए, if I am afraid, will it be a powerful action or a weak action? If I am sad, I'm depressed, will it be a powerful or a weak action? Even if I'm doing the needed thing, if it is studies, if you're studying because you want to study, the vibration is different. And if you are studying just because you have to study, the vibration is different. जितने भी लोग यहाँ पर है, if you are here because you want to be here, then you are aligned. If you are here because you have to be here, you are not aligned. उसमें मेरा नुकसान है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनका नुकसान है, या आपका नुकसान है? Of course. So this is wisdom, to be aligned. So aligning with a smile and aligning again with just saying a switch word, together divine. यहाँ आपका लॉजिक नहीं लगाना, okay? Just write this, together divine. So whenever you are acting, taking action, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, एग्जाम हो, आपका एग्जाम का पेपर हो, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो, आप एग्जाम से पहले अगर whatever you have done, आपने अगर आपका पूरा साल प्रॉपरली इंटीग्रिटी में दिया है, if you have given your best, what is the guilt? What is the guilt? It's just about practicing honesty. Okay, so if you have done that honestly, then you are certainly feeling more powerful. If not, grade yourself on a scale of 0 to 10, even in terms of honesty. Okay, so first is, see why I'm talking about this is क्योंकि practically है ना, ये सारी चीजें बीच में आएगी whenever you are facing such challenging times. Okay, so first is आपका एग्जाम है, आपने डिलीट किया, ठीक है, सुबह सुबह आपने ब्रश करते हुए कि ओके I let go of all my fears. Okay, even on the toilet seat you decrease your fears, you are more clear headed. Okay, so आपने cleanse किया, then you just align yourself saying together divine, together divine, together divine. And I'm giving you a switch word for aligning and seeding. For confidence, you can just write it all in capital letters. Together divine, anchor, 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 queen or king. ठीक है, together divine, anchor, queen, all in capital letters, and join all the words. This is a super powerful dimension, very useful. Consider it me being a magician, a magic tip for you. जैसे रहता ना abracadabra, the magic words, the switch words, which will keep you, more relaxed, more confident. Okay, so together divine, anchor, queen, or together divine, anchor, king. Okay, as per
your gender, you can use it. Okay, or you can just say divine magic begin now before you write your, कितना टाइम लगेगा बिफोर राइटिंग योर एग्जाम्स, उतना टाइम तो वैसे भी होता है. सो फियर वाले थॉट्स एंटरटेन करने से अच्छा है, या आपके एंगर वाले थॉट्स एंटरटेन करने से अच्छा है, या एंजाइटी वाले या सेल्फ ब्लेम वाले, आपको अंदर पता है कि आपने नहीं पढ़ाई की है, बट ओके, जितना भी आपने पढ़ा है, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड गिव योर बेस्ट. सो वही फाइल ओपन होगी जो आपके लिए जरूरी है, जो जो आपने, एंड नेक्स्ट टाइम डू अ लिटिल बेटर. But always cleanse, align, and then you seed in terms of affirmation, saying that I am confident, or whatever affirmation you are using. Okay, so first thing is, uh, again I want to tell you that anything that you do, if it is backed up by depleting emotions, by energy sucking emotions, by lower emotions, by sadness, by fear, by anger, koi bhi action, however right you are, will the action be a powerful action or a weak action? With lower vibration emotion, if I am taking an action, that action is going to be a weaker action. Powerful action चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? My actions need to be backed up by powerful emotions, emotions of joy, emotions of happiness, emotions of belief, emotions of yes, I can do it, of gratitude. Yes, so it may seem a little, you know, off track for you, but this is super powerful. I have done it for years and it works. It works. So yes, let's I want to hear something from you, so that I know that you're there, and I know whatever I'm speaking for past whatever minutes is really making a difference. And if you are unable to connect to me, please ask me questions so that I can simplify it to you, because the whole intention is that we all using this simple, easy, very powerful and effective tools which are freely available. So I'm giving you all simple tips. Okay, so cleanse, align, seed, and then grow. Seeding के बहुत सारे tools है. I am going to talk about it, but let me know where you are right now. So any questions? Are you there? Are you with me? I'm not used to, I always love to be part of an interactive session. So I need some interaction. If you can on your videos, or if you can speak up where you are, so that I can help you understand better. I can make sure that you use it in your life. So are you here? Okay. You are saying. Hello. Why don't you respond? Okay. चलो मैम, आप तो आ गए तो मुझे अच्छा लग रहा है. I'm here, but I just put it off because I didn't want to interfere. Welcome Yes. back. But I hope the children are getting it, the students are getting it. Yeah, Okay. it is very effective. Firstly, cleansing, Yes, then because cleansing में इतना क्यों aligning. बोल रही हूँ मैम? Because cleansing is something that was missing in my own life. And when I Okay. started doing that, being a pranic healer, my हाँ, life became very easy. और अपने okay. आप है ना, blame करने की need भी कम हो गई. Exactly. After cleansing, there was no need to blame self or others. Very Hmm. simple tools, ना? Actually, सिर्फ yeah, brush that is करते हुए. integrated. Hmm? That is integrated because we are teaching Reiki healing, na? I am into Reiki healing, and Awesome. we have integrated with the Reiki. We have integrated aura cleaning. So, Awesome. firstly, all the aura is cleaned.
and then only Reiki is given, then it is effective. And many problems, many means 40% of the problem goes just by aura cleaning, just by the Yes. cleansing techniques. या तो 40%. जो मैं इसमें इंक्लूड किया है मैंने बुक में ना मैम, दे आर लाइक विद इन सेकेंड्स यू कैन डू इट. डिलीट 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 बोलने में क्या है, Yeah, एंड दिस इज अ स्विच वर्ड. सो दैट बस बीइंग अवेयर एंड यूजिंग इट. स्पिट yeah, करने में exactly. क्या है, जैसे व्हेन राइट यू नाउ आर अभी हम लोग बैठे ऑन हुए हैं, योर. हाँ हाँ. जैसे अभी हम बैठे हैं, तो ऐसे ही जब मैंने ये सीखा ऑरा क्लीनिंग, तो ऑरा क्लीनिंग इज जस्ट लाइक, अगर हेडेक सिर में हैवी लग रहा है, तो यू आर जस्ट क्लींजिंग द ऑरा, एंड विद सम टेक्निक इज दैट दैट ओके, दिस इज डिलीटेड और दिस इज रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड. सो we do one thing like this, just our aura is just encapsulating us ना, तो उसको ऐसे क्लीन कर लिया, जस्ट ब्रूमिंग, एंड यू फील लाइट. Absolutely. Absolutely. And doing that with a smile will keep you safe from the unwanted emotions. कि Yeah. डर कि मैंने कुछ तो गलत अपने ऑरा में अट्रैक्ट कर लिया है, या एंगर या रेजिस्टेंस, nothing. So just keeping that smile on and doing whatever is required and needed, just that one simple thing can keep us feeling confident and maintaining our capacity. And of course अगर आपने वो किया होगा तो शायद aura lock भी एक कवर किया होगा. So one is cutting the links, unwanted links, by saying delete, and then locking the aura, keeping the Yeah. aura locked. These two things can make sure that our capacity is restored, capacity is preserved, that we save energy. एक तो है कि हमारी एनर्जी कुछ सक नहीं हो, डिप्लीट नहीं हो, हम रिस्टोर करें, एंड देन उसके ऊपर हम बिल्डिंग स्टार्ट करें. Then we start building. So how do you build? Here I have covered it with switch words. One is simple, divine magic begin now. It's all about using it. Restore divine order now. Or together divine anchor queen, together divine anchor king. Very simple. थोड़ा weird लगेगा क्योंकि कभी सुना नहीं है. But use it, na? Use it and then you conclude for yourself that is it working for you or not. So these are very, very simple and very effective tools. I have used even drinking, while drinking water, you just say the switch word and drink. What is that? This the same switch word. Every time you drink water, Yeah. you smile into the water. It's energy, and you are also energy. So never drink water in upset. Never drink water, because 70% of your own body, our body, is water, and water absorbs emotions. Yeah. Water absorbs thoughts. Water absorbs our own energy. So always charge the water just with a smile, and then drink it, or chant the switch word into it and then drink it. You will see miracles, because कितने बार हम पानी पीते हैं ना. So हमने क्या किया, सिर्फ पानी का भी आप याद रखो ना. इन दिस सेशन इट इज वर्थ वाइल कि पानी पीते वक्त उसको अच्छे वाइब्रेशन से पीना है, और निकालते वक्त सारे लोअर वाइब्रेशंस निकाल देने हैं. So whenever you are doing your toilet activities, think that emotional cleansing भी Yes. करना है, सिर्फ physical cleansing नहीं करना है. So उस Exactly. निकालो भी, और इसमें से पढ़ते तो ऑटोमेटिकली आपकी टंकी, आपकी कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, डेफिनेटली बेटर हो जाएगी. So these are so easy and powerful tools. So easy and powerful tools. We Yeah. need to use it. Then coming back to confidence, what is confidence? For me, it is that I believe in my choices. I believe in myself. I believe in my actions. I believe in my capabilities, not impacted by other people, other people's judgments, opinions, and their beliefs about something, about me, my actions, or my capacities. So you believe in yourself, and that is super powerful. And with due respect to
द अदर पर्सन, क्योंकि उनका अपना जर्नी है. दिस इज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन. इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं तुम कुछ भी बोलो तो मैं अपने मन की करूंगा या करूंगी. इट्स नॉट दैट. इट इज वे, इसका मीनिंग थोड़ा अलग और डीपर है. इट इज फ्रॉम कंपैशन कि अरे कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो अगर दूसरे इंसान का कुछ अलग भी, आपके फ्रेंड है वो बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो आपको अगर लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल है, तो आप इम्पैक्टेड नहीं हो कि ओके फाइन आई गेट इट. इसका मतलब यू कैन नॉट डू इट. But if you feel deep within, you are okay with that feedback. You take it as a guidance. And then you put all your energy into whatever you are doing. And then you have the patience to, because success immediately नहीं मिलता ना, वो journey है ना. जब जब कुछ नहीं होता है तब से लेके when you have what you intended to. See, whenever even if I started my journey as a magician, जब I started magic shows, तब immediate first show में ही या first learning में थोड़ी, we were 200 people, 200 participants in just the first workshop to start with. Only me and my elder brother we continued. बाकी जितने भी participants थे वो आज क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं. So why? Because you are not impacted by. इतने साल for 30 years, for every show कितने breakdowns आए होंगे, कितने challenges आए होंगे, कितना अलग अलग situations से जाना पड़ा होगा. So what worked is the energies. We were not impacted by anything outside of us. So powerful, no? Even when it is writing the book, when I had that as a author, जब सोचा तब से लेके when the book was published, कितने लोगों में कैपेसिटी है बुक लिखने की, पर फिर भी वो नहीं लिख पा रहे. So why? Because these all hooks, the energies within and the energies around, they the processing of that, the impact of that, the influence of that is huge. It's huge. This is whatever I'm saying takes lot of commitment, and the will to do something new so that you have new results. And this is all ancient wisdom, mostly what I'm talking about. All ancient wisdom, but super powerful. This is the time when we balance the ancient and the modern. दोनों को साथ में लेके जाना है. So whatever anybody says, आपको हिलना नहीं है. अगर if you are true to yourself, you are practicing honesty, you are doing your best, don't get impacted. Take other people's opinions, judgments as guidance. उसको filter करना है. So, you know, there is only one art of listening. How do you listen? How do you listen is so important, because you can listen with resistance. You can listen with guilt. There are people ना जो self criticize ही करते रहते हैं कि सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ. So वो भी नहीं चलेगा. Yeah, there are ki even before you know that other person is going to blame, you first blame on something. So these are all depleting. These things will decrease our true capacity, because the soul is immensely capable. The soul is immensely powerful. And when we start relating ourselves from that greater dimension, magic starts happening in our lives. Because अगर limitation है तो gender का हो सकता है, limitation है तो एक physical body का हो सकता है, but the soul is always free. The soul is always powerful. So there is a simple, थोड़ा सा हो सकता है heavy जाए यहाँ बैठे हुए students को, but फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी मैम कि whenever I feel that hook, I start praying that I'm not my body, I'm not my thoughts, I'm not my emotions, I am the soul.
I am not these thoughts, I am not these emotions, I am not these whatever is said. यानी जो दूसरे इंसान ने कहा वो मैं नहीं हूं, मैं वही हूं जो मैं अपने आप से कह रही हूं। जो जो दूसरे इंसान की मेरे बारे में समझ है वो मैं नहीं हूं, मैं वही हूं जो मैं अपने आप से कह रही हूं। So I am not this emotion. If I am feeling sad, I am not sad. I feel sad. दोनों में बहुत फर्क है। But you start relating, you identify yourself with someone who is angry, someone who angry person, someone who is a sad person, someone who is a depressed person. No, you have that emotion in you, but there is a way. There is always a way, and the way is certainly needing lot of commitment, lot of effort, lot of self discipline, and consistent flow of uh, your own focus, because आपके आसपास के 90% लोगों ने वो सुना नहीं है जो आपने सुना है पिछले 4 दिन में। everyone. So you will require a lot of commitment to keep it going and making all that you have learned as part of your own system for your own good. So अगर आपने सुना है, आपने समझा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा। By default, whoever is not using, आपके पापा मम्मी ये चीजें जानते ही नहीं है, आपके टीचर सारे नहीं सुने हैं वो for all the areas, आपके siblings, आपके whatever दोस्त, you can still love them, you can still accept them, but you need to be unwavered if you want to have a successful life and living for a purpose, living for an intention, living for the higher good than the materialistic world is super powerful, and that is what I am living right now. So when you are जस्ट एक बार सोचो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक बार सोचो कि जब आप आपके दोस्तों में आप चर्चा करते हो, बैठते हो, डिस्कस करते हो, आर यू डिस्कसिंग अबाउट people, are you discussing about situations and circumstances, that how bad it is and how are people, और कैसे लोग ऐसा करते हैं बाबा, समझ में नहीं आता and all. So what are your, see, that is what is making you every moment, every second that we are using. Are you discussing and thinking about ideas ki, okay fine, this is it and it is perfect, what is it that I can do about it? If you can do, great. If not, be okay and channelize your own energies accordingly. But otherwise you're polluting yourself and polluting people around you by your own thoughts and emotions, and you don't even know. So we need to take responsibility of our own, as much as you are taking responsibility of the physical scenario today by wearing masks and sanitization and washing hands. This is equally important, or even more important, because the energy world, the emotional world is super polluted right now. So we need to together stand and make that shift, and we have the power. So how do you process information? कौन से thoughts को हवा देनी है, कौन से emotions को हवा देनी है, कौन से experience को हवा देनी है, choice आपका है। कोई आपकी गर्दन पे चाकू रख के बोलने तो नहीं वाला है कि ये करो और ये नहीं करो। लाइफ आपका है, बट अगर हमें आगे बढ़ना है तो this is the way I would want you to step into and choose, because it is super powerful. It is super powerful. So if you have any questions, please ask me so that I can be more useful. Ma'am, one question I am having. जी
Please tell. Regarding the selection of persons in the professional life. How do you confidently select? Yeah, or what should be the criteria for selection? सर मेरे क्राइटेरियाज लाइफ के बहुत अलग है, मैं वही शेयर करूंगी. हाँ हाँ बिल्कुल मैडम वही. Because what I do is I write down, sir. I write down what I want, and I really give pure energy to it. I use the energy science. I imagine that I have attracted the right person, or someone who is dedicated, someone who is aligned to the goal, someone who understands the higher purpose, someone who is trustworthy. And then I write it down, and trust me, whenever I had the breakdown, उसी समय कोई ना कोई फोन आ जाएगा, कोई ना कोई किसी से मिला देगा. अभी ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसे आया कि हमारे टीम में जो की मेंबर्स थे, उनमें से कईयों ने लीव करके अपना खुद का ये स्टार्ट किया. सो व्हाट आई डिड वाज, आई डिड नॉट create any blame within. I did not create even guilt within. I just blessed that okay, it is all happening in the divine order. और अब क्या होना चाहिए? So what so what next? And what next is that okay, it is all happening in the divine order, and we are attracting the right team, the needed people to fulfill this higher intention. And I ऐसी चीजें हुई ना कि वी हैड वन पर्सन, अ फिजियो, हु हैड जस्ट 1 महीने पहले ही, वो 6 साल यूएस में रहे, और उसके बाद जस्ट 1 महीने पहले वो आए और इमीडिएटली उनसे कनेक्शन हो गया, एंड ही जॉइंड अस इवन बिफोर द अदर पर्सन लेफ्ट. So, क्या हमने न्यूज़पेपर, वी डिड नॉट फॉलो एनी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल न्यूज़पेपर में ऐड देना या जो भी वट एवर HR related initiative. If you believe, you take it. But even without doing that, just that right phone call, the right time, and this is not once. I have experienced this 1,000 times. Whatever I want, I just put it to the universe. I pray with pure intention. एंड आई अट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली वो चीज सामने आ जाएगी, वो पर्सन सामने आ जाएगा, रास्ता निकल जाएगा. उस समय सिर्फ देन आई टेक दैट एक्शन, आई टेक वेरी क्विक एक्शंस, वेरी क्विक डिसीजंस. फिर मैं टाइम नहीं लगाती हूँ कि नहीं हमने कुछ यूनिवर्स से मांगा, अब अचानक कोई अलग पर्सन आता है. हमारे एक क्लाइंट ही है जो आए और मुझे सिर्फ इतना बोला कि मैम आगे ना मुझे आपके साथ काम करना है, I want to join you and I am okay to join with any designation. बस मुझे आपके साथ काम करना है. Next day she joined. I said okay, you're in. Why? Because somewhere I could feel that I believe on inner guidance. वो अंदर से एक सिग्नल आया ना कि yes, this is the right person. मैंने यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स ने भेजा. उस समय वो समझ, वो wisdom to know that okay, this is it, this is a call and you got to take it. And I just took it and रास्ता निकल गया. उस समय मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा. I only connect to one, the superpower. I connect, I get there and I take quick decisions. I don't let my energies, because मैं किसी और को पूछूं देखो ये कैसे है, ठीक लग रहा है क्या, फिर वो उनका तर्क लगाएंगे, फिर उनका फियर्स या जो भी वरीज एंजाइटीज उस वो एनर्जी ऐड होने का चांस है. सो आई डोंट डू दैट. व्हेन इट इज अबाउट टेकिंग सच डिसीजंस, आई टेक इट वेरी फर्मली. So my only connect is with the divine, and then rest automatically flows and falls in place. So to attract the right person more confidently, the confidence only comes when we are connected to the supreme. Because बाकी तो उनके अपने वर्जन से we need to respect. Yeah. And you are आप इसका वेरिफिकेशन. हाँ सर. मैडम एक क्वेश्चन और था मेरा. आप कुछ बोल रहे हैं क्या मीना मैम? हाँ मैं कुछ बोल रही हूँ. मैं ये बता रही हूँ कि मैंने सोचा इस बार मैंने अटल में बहुत अच्छे स्पीकर्स बुलाए थे. लास्ट इन नवंबर आई हैड अ वेरी बिग प्रोग्राम
well, this is for students. I had for faculty development program, a very big program, and there we Wow. had nationwide participants and very senior professors even. So that time we called many good speakers, but this time I wanted to have some change, and I wanted to have some new person to come into with me in the team, and I did the same thing as you are recommending. I just sat openly and know what to do, what how to do, and now okay, everything is to be done. Means you have to do something. So then I searched on Google that I want something like that, and I searched something, and And you I got you. yes, and we both got connected to each other. And definitely, So this is the validation, huh? probably This is even validation. I asked for something. I asked for something, and I resonated, and you asked, and then it is like, uh, a win-win. If everyone evolving, Uh, everyone and contributing. I landed up to another magician also, very very great musician. You must be knowing uh, Kriti Pathak, or surname I am forgetting. And she is also a very nice person. But then I had to choose. Then I chose you. Thank you for choosing me. Thank you for choosing me. And I always use this switch word, sir and ma'am. That is change divine order now. And I Uh, then tell myself that, okay, now you are using it. And it is, you need to believe that it is all happening in divine order. It may not happen yeah, as per my order. कि मैंने कुछ yeah. सोचा वो नहीं हुआ. अभी तो It's पूरा as per divine. यूनिवर्स, अभी अभी तो पूरा दुनिया अभी वैसे सिचुएशन में है ना, कि हमारे ऑर्डर के हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा है. So we need to surrender and accept that it is not happening as per my order, but it is happening in the divine order. और यहाँ मुझे कोई भी चीज को resist नहीं करना है. I need to keep flowing. I need to keep respecting. I need to be focused to the higher intention. और वहीं पे ध्यान रखना है. इधर उधर एनर्जी नहीं फ्लो हो देना. वो सब acceptance. Do whatever is required and needed to our own best capacity, and there would be a way made for us. Yeah, madam, that's true. Even means it was the means our institute is doing this program, and we don't have much funds this time. All those limitations were there, but I wanted to expand. I wanted to expand and attract the right person. So, and Pallavi ji agreed. Otherwise, many ifs and buts were there. But Yes, मैम yes, and मैम एक क्वेश्चन और है मेरी तरफ से. हाँ जी, हाँ हाँ जी, मिश्रा जी. हाँ, मैडम जैसे सिग्नल्स आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि दैट द पर्सन विथ नेगेटिव एनर्जी इज देयर अराउंड यू एंड यू हैव टू वर्क विद देम. So what problem I face that I normally react. So I just want to know how to behave or how to conduct your daily routine with them, even though I am knowing that these guys or these persons are negative energy or with negative aura, but it is compulsion to work with them. So can you say a few words how to conduct daily routine with them? yes, sir. Because I am Uh, facing this problem a lot. we all face this problem. आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा. जी जी This is मैडम. very powerful. So one is कि this is energy science ना, उनका एनर्जी नेगेटिव है. एक है कि हम विक्टिम बन गए और रेजिस्ट करने लग गए कि ओ आई कांट स्टैंड दिस पर्सन, है ना. सो आपने अपने आप को कमजोर बना दिया था. ओके, जहां है वहां है. तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने हमारी टंकी और हमारा कनेक्शन इतना पावरफुल रखा ये कि हमारी ऊर्जा से वो हील हो सकता है, मैम और कैन हम पे यू भी और हम पे रिपीट? भी प्रभाव नहीं हो रहा है. हमने हमारा कनेक्शन और हमारा विद द यूनिवर्स, विद द सुप्रीम, वो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तो कितनी, आई मीन इट इज अनमैच्ड, इट इज इनफाइनाइट. सो जब आप उस इनफाइनाइट ऊर्जा से कनेक्टेड रहोगे, होता क्या है उस समय ये कनेक्शन निकाल के उधर कनेक्शन हो जाता है जो आपको नहीं चाहिए. तो आपको आपको वहां से कनेक्शन हटा के ये कनेक्शन बनाना है, रिस्टोर करना है, बिकॉज यू नीड दैट एज अ सोर्स.
तो अगर आपकी टंकी ऑलरेडी आपकी फुल है और आप कनेक्टेड हो, तो इन फैक्ट यू विल बी यू नो एब्सोल्युटली अनवेवर्ड। फिर भी आपको ऐसे लगा कि आप वेव हो रहे हो, यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, यू स्टार्ट ब्लेसिंग द अदर पर्सन इन योर माइंड। क्योंकि कोई भी चीज को अगर मैं रेजिस्ट करूंगी तो वो मुझे और अस्वस्थ कर देगी। सो इट मे साउंड क्रेजी बट स्टार्ट ब्लेसिंग दैट ओके आई ब्लेस आई ब्लेस आई ब्लेस। और वो पर्सन में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर सकते हो, तो आप उस क्वालिटी को एनर्जाइज करो, ना कि जो आपको पसंद नहीं है। सी हम सर बहुत सारे फेजेस से जा रहे हैं, हम कोई भी इंसान यहाँ पर ऐसे नहीं है कि जो बहुत पॉजिटिव पूरी लाइफ रह सकते हैं या रह चुके हैं, है ना। देयर वुड बी प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स, वी आर ऑल गोइंग थ्रू सो मेनी यू नो डिफरेंट फेजेस एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स फेज। तो बिना वजह तो कोई भी इंसान हमें मिलता नहीं है, या तो हमारे लिए कोई लेसन है, कोई गाइडेंस है, या कोई डेवलपमेंट का चांस है एज अ सोल। So when we understand this very powerful dimension to it, you will not be impacted that it is some lesson, है ना। हर एक का नहीं हमें ये आता है ना, हमारे अंदर की कोई पार्ट से जो हील हो सकते हैं उस समय। So we just, they are not negative or positive, they are different, they are different, they are different। और वो ऊर्जा से आप अनकंफर्टेबल हो क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। सो अगर फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप ऑलरेडी डिप्लीटेड हो और इस समय आप और डिप्लीट नहीं होना चाहते हो, तो आप आपके ऑरा को लॉक्ड रखो, बट रेडिएट प्योर कंपैशन टू द अदर पर्सन। रेजिस्टेंस वाली एनर्जी, you are all the time, you know, if you are connected, if your aura is locked and you are all the time your जो भी आपका गिविंग है, you need to be very clear about कि I am going to be this, I am going to be someone who is relaxed and calm, ठीक है। और आप अपने आप को रेट करो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, फिर भी रिएक्शन निकल जाए तो डोंट फील गिल्टी बिकॉज आपका भी सर एक पैटर्न है एंड वी आर ऑल डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग टुगेदर, पर हमें सबको साथ लेके चलना है। सो आपके होने से दूसरे को उनके कमियों का एहसास नहीं होने देना, आपके होने से उन्हें उनकी अच्छाइयों का ही एहसास हो, इवन इन योर थॉट्स। और फिर भी कुछ है तो यू कैन टॉक इट आउट, यू कैन राइट। व्हाट आई डू इज, मैं ना नेगेटिव चीजें बोलती नहीं हूँ, मैं नेगेटिव चीजें लिख के ट्रांसफॉर्म करती हूँ और पॉजिटिव बोलती हूँ। सो उससे मेरी ऊर्जा में भी वही फ्लो होता रहता है जो मुझे चाहिए। बिकॉज इवन इफ हमारा इंटेंशन कितना भी साफ हो, कभी कभी क्या होता है, वो अगर आप किसी को नेगेटिव बोलोगे तो वो तो बहुत आपको प्यार नहीं भेजने वाले, तो उनकी ऊर्जा से आप और डिप्लीट होने वाले हो। तो वहां पे आपको प्री वर्क जो है वो खुद करना है, और उसके बाद you just see to it that for me this person is this, it is not this। so आपने वो साइड एक्टिवेट कर दी उनकी जो आपको पावर देती है, वरना आपकी एनर्जी तो डिप्लीट होने वाली है। so here you are saving yourself also and you are contributing the other persons in the other person's life also। so may it be at home or work or any area of life, this is a super powerful way to handle such situations। I hope I answered your questions। Yeah, absolutely. My problem was that whenever I feel the negative energy or negative aura, I just react very bluntly. So from now onwards, I will try to change myself because I can't change others. So I have to change myself. Yeah, and we can forgive ourselves every time we have that reaction, because otherwise it becomes our truth। so we forgive and we again align, we forgive and align, we forgive and align। और ये क्विक रहना कि एक बार आपका रिएक्शन निकल दिया, आपने उनको फॉरगिव कर दिया, वो ऑरा भी चला गया, लेकिन अगर आप वो थॉट में हो तो आप फिर भी वही एनर्जी से कनेक्टेड हो जो आपको नहीं चाहिए।
तो आपको वो कनेक्शन डिलीट करना है, रिस्टोर विथ व्हाटएवर यू वांट एंड वाइब्रेट आपका एनर्जी, आपका फोकस इमीडिएटली क्या है, नहीं नहीं नहीं, जो मुझे नहीं चाहिए वहां मैं क्यों, I mean that is depleting my energy. So I am depleting my aura just by thinking about the person और जस्ट बाय बीइंग अनकंफर्टेबल, बिकॉज मेरी इमोशंस ज्यादा ऊर्जा बह रही है ना वहां पे, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, द ऊर्जा इज फ्लोइंग देयर, सो Forgive योर and ऊर्जा forget. नीड्स टू फ्लो. Yeah. यू गॉट इट, यू गॉट इट. जी जी, थैंक यू सर. Forgive and forget is the best policy, huh? फॉरगिव Best एंड policy. reframe मैम, फॉरगिव एंड reframe. Forgive and reframe. Reframe. मतलब फॉरगिव किया और उनका वो वर्जन याद रखा जो हमें पावर देता है. Okay. Thanks a lot, madam. Thanks a lot for giving us your precious time. Reframe. जी सर, आई होप आई मेड अ डिफरेंस. Sometimes if we are avoiding not should not be done, no? Avoiding that the persons which are not suitable to us, if we are avoiding them, just we are neglecting, Well, we are ignoring. wanting with what intention is हाँ. very very important. See, एक है कि I am avoiding, I cannot stand. उसमें क्या हो रहा है, resistance है. What I resist, it will come up multiplied, है ना. तो जिसको हम resist करते हैं, क्योंकि हमारी ही तो ऊर्जा उधर बह रही है in so much of dominating emotions. So what else can you expect? एंड दूसरा इज उसको हमने लॉक करके बंद कर दिया कि ये फाइल हमेशा के लिए बंद, but still it is sucking your energy there. So one is you gracefully accept, forgive, leave it to the divine order. ऑटोमेटिकली अगर मैं जो वाइब्रेशन में हूं ना, मैं वही वाइब्रेशन की व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अट्रैक्ट करने वाला हूं या करने वाली हूं. तो कितना सिंपल है, जैसे ही ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं, इट इज अ गाइडेंस फॉर मी कि अरे अपनी टंकी तो भरी नहीं, मतलब डिप्लीट हो गई. अपनी टंकी भरो, अपने आप को बेटर वाइब्रेशन में लेके जाओ, तो वैसे सिचुएशन आने लग जाएंगे. सो it is more than ignorance. If you keep yourself, improving in your vibration, the universe will take care of the ignorance. इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने किसी को फॉरगिव किया तो जाके उसको मिलना है, नॉट एट ऑल. Connect. See, if I am vibrationally not connecting to someone, we may not be able to connect to everyone. लेकिन the flow of energy is compassion for all beings, is understanding for all beings that I have not lived your life. I have not walked on the path that you have walked. So whatever you have become, negative or positive, it is because of the life situations, whatever you have seen, you have heard, you have lived. उसकी वजह से आप जैसे बने हो वैसे बने हो, और उनका अपना टाइम है. उनको हमने सुधारने तो नहीं जाना है उस समय, क्योंकि we can only bless that they come into vibrations. And मेरा एक मानना है कि जो भी लोग ऐसे किसी को पकड़ के लेके आते हैं ना कि मैम इनका कुछ करो, तो उनका कुछ नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट इन रिसेप्टिव मोड. उनका दरवाजा बंद है. एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, बिकॉज उनका अपना एक चश्मा है और सब कोई हमारे जैसे तो नहीं हो सकते. लेकिन जो खुद मांगता है वो भर भर के लेता है, बिकॉज दे आर रिसेप्टिव. So we have to respect everyone's world. We have to respect the journeys and just take care of our own vibration. The moment we learn to take care of vibration, the moment we learn to cleanse the impact of negative vibrations, the moment we learn to align with the Supreme, our life becomes very easy. And let the universe do all the tough and the dirty job. और द नीडेड जॉब, कि क्यों हम लोगों से झगड़ा करें और बोले कि आई डोंट वांट टू सी यू और आई डोंट वांट टू डू दिस. यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर वाइब्रेशन एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स विल ईदर चेंज. दूसरे लोगों को या तो चेंज होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, या वो आपके लाइफ से अपने आप चले जाएंगे. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका वाइब्रेशन का ध्यान रखना है. इफ यू रियली वांट ट्रू कॉन्फिडेंस. Absolutely right, madam. You can work on yourself only. You have to work on yourself only, and rest the divine power will take care.
दैट इज द ट्रस्ट. यस, Absolutely, बहुत absolutely. सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं. ऐसे लोग फिर जीवन से ही चले जाते हैं अगर जरूरत नहीं है तो, या हम कहीं चले जाते हैं या वो कहीं चले जाते हैं. लाइक इट हैपेंस. उस समय we have to be very very strong, very very aligned and very very receptive, क्योंकि वो चेंज है ना, वो हमें एंग्शियस कर देती है और हम वापस वही एनर्जी फील्ड में चले जाते हैं, लो वाइब्रेशन में. क्योंकि हमें लो हो या हाई हो, हमें आदत हो गई है ना वो वाइब्रेशन की, तो हमें वो सही लगता है, वो लोग भी सही लगते हैं, वो परिस्थिति भी सही लगती है, वो जैसी भी है. तो जब आप आपका वाइब्रेशन ये चेंज करते हो और आप नए परिस्थिति को, नए लोगों को अट्रैक्ट करते हो, तो उस समय वो जो चेंज है, वो शिफ्ट है, उस समय यू हैव टू बी वेरी वेरी strong and telling yourself that yes, it is all happening in the divine order and I have to take this call, I have to be okay, and whatever is gone is not in the vibration. Only thing I can do is restore my own vibration back. Then trusting and still having compassion and then taking your actions from there. वैसे भी actions आप आपका best ही करो, but this pre-work is what is missed and hence हम बार बार वही situation में फंस जाते हैं. Like if I'm fearful, I attract more fearful situations. If I'm angry, I'll attract more situations that will make me more angry. So only thing what I can do is change my vibration to restore my confidence and capacity. Yes. Okay. Thank you very much. So the discussions, these are just, this is just a beginning. This is just a beginning. And we look forward for various interactions. Yes, in ma'am. Absolutely. seminars. Meena ma'am is absolutely Thank right. you for giving me an opportunity, sir, ma'am. Thank you so much. And you will be remain associated with our department also and our institute also. For future programs also, we will be contacting you, and you have to provide us your precious time. Certainly, certainly. And I would love to have an interactive session more. I'm a person who believes in that and the flow of energy is very different. जैसे आप दोनों ने आपका videos on किए, I think the energy exchange and whatever people have got from that would be much more worthwhile than just me speaking about, a topic. So let's keep it interactive always. You can come up with as many questions, as many field, whatever, जो मेरे दायरे में होगा, वो मैं I will give my genuine whatever, share my learnings on that, and I hope that makes a difference. Yes. Let the divine will prevail. Let the divine will prevail. Let the divine power be with all of us. Bless you all. Love you all. Yeah. Bye-bye. See you. Thank you so much for being here. Thank you Thank to you, you, ma'am. Pallavi. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And dear participants, now we are moving ahead for our valedictory session sharp at 3:30, because our another institute director will be coming. The National Institute of Design director will be joining us sharp at 3:30. So may I request all of you to be here at 3:25 sharp. Thank you so much, and everyone remember to subscribe my channel and to visit my Facebook page and consider buying my book. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you once again, Manit, Bhopal, and everyone who is connected. Thank you, Meena, ma'am. Thank you. Everyone. Thank you. See you again. See you again soon. Thank you so much. Okay. See you soon, madam. Pallavi ma'am, see you soon in Manit, Bhopal again. Yes, certainly looking forward to. Yeah, and we are visualizing that you are coming physically over here very soon. So as this situation gets normal, and as we are, this is a campus reopening session type, na? So very soon our campus will be reopening. So we would like to invite you physically over here, and we'll enjoy and absolutely. This was the Let program. it all happen, ji sir.
this was the program for campus reopening. So as soon as our campus reopens, you will be invited again. Absolutely. Let it all happen in the divine order. Thank you so much. Lots of wishes to you. Thank you. Thank you for the Okay, initiative. okay, God okay. bless. Bye. Okay, bye bye.